All right, ladies and gentlemen, we've got Aman Saini inside the cage in the red corner wearing black and white MFN shorts. All right, ladies and gentlemen, let's start this bout. Referee in the cage, Abhishek Bisht. We've got Mir Ruiz in the blue corner taking on Aman Saini in the red corner. Round one, and the action begins. This is going to be high octane, power packed. Manan, both these guys look ferocious. I love the दोनों way. बहुत कंडीशनड बहुत हार्ड लग रहे हैं राहुल नो डाउट अबाउट इट I love the way Mir is dancing. Oh my goodness, that kick is vicious. Vicious kick. Whoa. Whoa. अरे नाइस नाइस एंड मीर बोल रहे हैं आजा Bring it on. Bring it on. With your strikes. Whoa. बहुत लंबा शॉट था लेकिन मीर ने अच्छा काम किया मिस करने का My goodness. नाइस लेग किक Aman looks conditioned with his legs here. अमन ने दोबारा हाथ छोड़े और दोबारा मिस हो गए मीर की मूवमेंट मुझे बहुत अच्छी लग रही है राहुल आई लाइक हाउ इज सो एक्टिव But wow. But look at the way Aman is trying to push him around the cage and trying to stop his range of motion. बिल्कुल अमन छोड़ नहीं रहे हैं Put him in a frame and then start beating him. या अमन छोड़ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी मीर Oh को my goodness. What is Mir preparing, you know? Is he preparing for a powerful right hand? My goodness. He gets a right hand instead. You know, this is the worst you can do. You tell your opponent what is coming next. Which is the worst? Oh my goodness. Mir actually looks like a tough guy here. काफी वेल मैच्ड हैं दोनों ओपोनेंट्स अच्छा पंच लैंड हुआ अमन के लिए ओ एक और अच्छा पंच Nice. और मीर टेक डाउन लेने की कोशिश कर रहे हैं आई थिंक ही विल गेट इट No, he doesn't get it. I think that's some good wrestling skills, but at the same time, some good defense. Of course, he has to get the bag. You know, it's बहुत बढ़िया काम it's like your prey coming inside your cage, man. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अमन He just has to put the other hook in and stay there. Because Mir is going to let go of his leg, and that's the time he can lock in. That's the time he can lock in a rear naked. बहुत अच्छे स्ट्राइक्स मार रहे हैं राहुल अमन यहाँ से बहुत अच्छे Look at the power of his strikes, and he's actually utilizing his technique. You know, he's breathing out with every strike because he knows he has to throw in a lot of power against Mir, who looks very strong here. एंड ओवर टाइम Oh my goodness. ओह वाओ व्हाट अ रिवर्सल What a reversal! ओवर टाइम these strikes take a toll yeah My goodness, you know, Mir, much respect to Mir here. He's a brave heart. He's been fighting like a lion inside a cage. लेकिन इस एक्सचेंज के बाद राहुल गेम थोड़ी सी चेंज हो गई है बिल्कुल गेम चेंज हो गई है. Aman looks like a bit tired. Whoa. Well, I think But that's the Aman worst looks you can more go for. confident also. You can't be Francis Ngannou here. You know, you just can't rely on a single power punch. Oh my goodness, that's some conditioning. That's some conditioning. Aman is actually spitting fire with his eyes and eating those leg kicks. A tough nut to crack. बिल्कुल राहुल आपको पता होना चाहिए आपके अपोनेंट किस तरह के हैं और अगर टाइम लेने की जरूरत है तो पूरा टाइम लेके खेलना चाहिए बहुत ही बढ़िया लेग किक अमन की तरफ से एक और लेग किक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अमन इस फाइट को अपने कंट्रोल में रखने का और इस बार फेस पे गई किक एंड इट लैंडेड मैन इट वाजंट वेरी हार्ड बट इट लैंडेड एक और टेक डाउन डिफेंस अमन की तरफ से क्या बात है ये फाइट को राहुल अमन बिल्कुल वैसे चला रहे हैं जैसे वो चलाना चाहते हैं वो अटैक कर रहे हैं मूव कर रहे हैं टेक डाउन डिफेंस कर रहे हैं एंड सम मोर What a विशियस hit, पंचेस Mir tries to barge in and he gets Solid. a good left hand Solid. by Aman. Well, if I was Aman, you know, Aman is a black belt in karate.
if I was Aman, I'm going to wobble my opponent with a right leg kick and then throw a couple of them and start throwing combinations on the faces, because the moment he starts thinking of his leg which is hurt, he... Oh my goodness. मिहिर what happened? काफी हिले हुए लग रहे थे मुझे. Mihir has given up. Oh my Mihir doesn't goodness. want the fight to continue anymore. Well, Mihir fought like a warrior here, and it's sad to see that this guy says he cannot continue. Ladies पता नहीं and दोनों gentlemen, फाइटर्स क्या बोल रहे हैं एक दूसरे को. ladies and gentlemen, we've got the winner. We've got the winner here, Aman Saini.